Hello and welcome to the channel of English. Today we are once again going to study the topic figures of speech. We have studied a few. Okay, let's begin. We have studied simile, we have studied metaphor, right? Now is the turn of the next figure of speech, onomatopoeia. Without wasting too much of time, okay, let's begin with onomatopoeia. What is onomatopoeia? Onomatopoeia. Did you hear that? What was it? It was a sound made by the bee. You saw the bee making a sound. So, see one more example. Now, I would say that you heard two sounds. So, onomatopoeia refers to the figures of speech which suggest sound produced by different things. किसी भी चीज की जो आवाज होती है, ठीक है? Any word, noise, any sound produced by anything, it refers to sound produced by the simplest of the figures of speech. Different things. किसी भी चीज की आवाज जो आप सुने, anything, just anything, any sound which you hear, that comes under the category of onomatopoeia. Like cat's meow. Example can be, अगर poetry से example लें, तो it can be how they tinkle, tinkle. How they tinkle. You heard the ringing of the bells, ringing of the phone. है ना, फोन में आवाज घंटी आती है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स आते हैं. सो ये जो साउंड के लिए जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, द वर्ड्स मेंशन्ड फॉर साउंड्स, दे आर कॉल्ड एज onomatopoeia. और डू वी से, वी कॉल देम एज onomatopoeia. ठीक है, उनको onomatopoeia कहते हैं. Just you can see a few more examples here. So you heard the sound produced by these different things. It can be screeching of a car or tires of car. Brakes लगते हैं, screeching of brakes मान लो. ठीक है, you can say screeching of brakes. So screeching sound produced by ये tinkle sound थी. ठीक है, so any sound produced anywhere, चाहे कहीं भी आपको sound producing word दिखाई दे, if you find a sound producing word anywhere, that comes under the category of onomatopoeia. So onomatopoeia refers to sound producing words. ठीक है, जैसे there is a poem in class 11, Laburnum Top, उससे example है of chitterings. ये वाला example देखा है आपने? Have you seen? Have you read the poem? Laburnum Top, उसका ये example है of chitterings and a tremor of wings. So जो sound है, चिड़ियां आती हैं, चहचहाती हैं, chittering करती हैं, so that comes under the category of onomatopoeia. समझे? Did you understand? So onomatopoeia refers to the sound produced by different words. I hope with the visual examples, जो वीडियोस आपको दिखाए, उससे आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो कहीं भी कोई भी आवाज, झरने की आवाज है, किसी के खर्राटे लेने की आवाज क्या कहते हैं? स्नोरिंग कहते हैं. सो जस्ट अ साउंड ट्रिपिंग ऑफ द वाटर, पानी के टपकने की आवाज है. सो जस्ट एनीवेयर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट or animal, thing, person, that is called as onomatopoeia. Understood? I hope you have got the point. Now let's move towards the second one of today. आज का दूसरा क्या है? दूसरा है आज का alliteration.
What do you understand by alliteration? Anyone of you know? मालूम है आपको? Do you know what is alliteration? सुना है आपने? Alliteration क्या होता है? Alliteration refers to when there is repetition of consonant sounds. ठीक है, consonant sounds में जैसे आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा हो जहां पर हमने टंग ट्विस्टर्स पोस्ट किए थे, आपने बोलकर देखा? Did you try to speak those tongue twisters? They will help you in pronunciation also. They are very very useful in improving our tongue. हमारे बोलने की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में टंग ट्विस्टर्स बहुत 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 हेल्पफुल होते हैं. सो यू शुड हैव ट्राइड टू सी देम. सो एलिट्रेशन का क्या मतलब है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. एग्जैक्ट मीनिंग यही है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. ठीक है, बट समटाइम्स वी यूज इट फॉर द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद सेम लेटर्स. We also use it for this. Words beginning with same letters. The tongue twisters, if you remember, I posted. She sells seashells by the seashore. Okay. Second one. 6 slippery snails slid silently. So those tongue twisters, जैसे उसमें एक एग्जाम्पल हमने दिया था, she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. So इसमें क्या है? देखिए, all the words are beginning from S. The prepositions, articles are not counted. So there is a repetition of the words beginning with same letter or repetition of consonant sounds. दोनों में से आप कोई भी मान लीजिए. ठीक है, लगातार रिपीट हो रहे हैं, एक ही शब्द से बार 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 कई सारे सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड. एक एग्जांपल है आपके लैवर्नम टॉप में. देयर इज वन एग्जांपल, इफ यू हैव रेड, पढ़ा है आपने वो एग्जांपल. ये है एग्जांपल. सडननेस, अगर आपने एग्जांपल ध्यान से पढ़ा हो तो क्या था एग्जांपल? सडननेस, startlement of a branch at a branch. Suddenness, a startlement at a branch. This was the what? This was the example of the laburnum tone. One more example I had given in the tongue twister series, if I remember. Peter Piper. This is really very very interesting. Peter Piper picked a peck of Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper. इसीलिए इसको पढ़ने का, याद करने का तरीका जो हमने वीडियो में बताया था, टेलिंग इट टू यू अगेन, दैट फर्स्ट रीड इट केयरफुली, स्लोली, उसको मन में बसा लीजिए, फिर बोलिए तो गलती नहीं होगी. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. और अगर आप बिना पढ़े ध्यान से 2 मिनट कुछ सेकंड सोचे बिना, एंड इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, देन इट विल गो. तो हम एलिट्रेशन की बात कर रहे थे. तो एलिट्रेशन क्या है यहाँ पर? Alliteration is repetition of consonant sounds, or you can say the repetition of words beginning with the same letter. दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं. So that is alliteration. ठीक है. तो with the help of tongue twisters also you can just understand that tongue twisters mostly are part of alliteration. थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अगर वॉल से शुरू हो रहा है
constantly, but in a base form, we consider that the words beginning with the same letter, if they are repeated again and again, then it is allocation. So hope you understood these two figures of speech of the day. These were the two. One will bring some more in the next episode. I have made these short episodes so that you can understand these easily in a better way and you don't find it boring. Long videos boring लगने लगते हैं ना. क्या करेंगे, पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है. So all the best for the future and keep coming back for more figures of speech. Till then, bye.